Welcome to MDC Learning, Standard SYBCom, Subject Business Law. Hello learners, today we will talk about Indian Companies Act 2013 Part 1. Under that, we will focus on promoter. So, let's know about the promoters. Under that, first we will focus on the introduction of a promoter and then we will move further toward the duties and liabilities of a promoter along with remuneration of promoter. So let's go further and see the introduction part. A promoter is an individual or an organization. See students, on your screen the introduction of a promoter is clearly given. The first paragraph contains the meaning of a promoter and the second paragraph will give you clear-cut information about the corporate promoter. Promoter can be an individual and it even can be an organization. What promoter do? Promoter raises money for some type of investment in a company. Corporate promoter is the person who does all kind of preliminary work incidental to the formation of the company. After that, on your screen you can see all those things which a promoter do is written in the last two lines of your screen. It does its promotion, it does its incorporation. Incorporation is nothing but the formation of a company, and flotation and solicits people. That means it motivates, it asks people to invest money in the company, and many more things which a promoter do. Promoters are nothing but the people who work for the enhancement, advancement of a company. Promoters are the primary people and they can be individuals and they can even be an organization. Let's go further and see the official definition of the word promoter under Section 2, subsection 69 of Indian Companies Act 2013, Part 1. Promoter means a person. Promoter means a person that can be of three types. On your screen you can see that. First one is प्रमोटर वो होता है जिसका नाम जो कंपनी है उसके प्रोस्पेक्टस में दिया गया हो या फिर उस पर्सन का नाम आइडेंटिफाइबल हो कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में. सो हमारे प्रमोटर के फर्स्ट जो मीनिंग है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें साफ साफ दिया गया है प्रमोटर इज अ पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो या फिर उसका नाम आइडेंटिफाइबल हो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट या एनुअल रिटर्न में. बी यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 क्लॉज बी में लिखा गया है प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के वर्किंग को, कंपनी के काम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैंडल करे, कंट्रोल करे, वो होता है प्रमोटर्स. प्रमोटर्स कोई भी हो सकता है जैसे कि शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज अदर पीपल्स. सो थर्ड वन इज इन अकॉर्डिंग्स विथ वूज एडवाइस. क्या कहता है थर्ड वन? जिसकी एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे कंपनी काम करती हो, कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए जिसके एडवाइस पे कंपनी काम करती हो वो होता है प्रमोटर. यहां तक कि आपके सी पॉइंट में लिखा गया है कि ऐसा पर्सन जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा हो और उसे अपने काम करने के लिए सैलरी मिलती हो, that person is not a promoter. For example, CA, CS, CMOs of a company, etc. are not a promoters because they are working in their professional capacity and they are getting salary out of it. So, definition of a promoter under Indian Companies Act 2013 Part 1 is given on your screen. The promoter means a person who can be of three types on which is given on your screen. First, his name should be in a prospectus of a company.
or his name should be identifiable in an annual report. Second, he should control the affairs of a company, whether directly or indirectly. And the last one is whose advice and the directions and the instructions are important for working of a company, and all those directions and instructions and advices should be done by paying full attention to the act, that is companies act. कंपनी एक्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ही वो पर्सन एडवाइस या डायरेक्शन दे सकता है. चलिए आगे चलते हैं एंड देखते हैं duties and liabilities of a promoter. Now on your screen you can see the three top most important duties and liabilities of a promoter. First, he should stand in a fiduciary position toward the company. What does it mean? It means that he should stand at a trustworthy position toward the company. Promoter is a person who fundamentally gives important work of a company, so he should be a trustworthy person. That's why it is written that he should be in a position to have a fiduciary relationship. Second is duties of a promoter as regard prospectus. See, prospectus is a particular book which contains all the information of a company. All those information of a company is provided to the general public, to the shareholders, through prospectus. So it is the most important work, that prospectus should be true. It should not be misleading. It should not contain any information which is wrong or fraudful. That's why it becomes the most important duty of a promoter to make the prospectus of a company. That's why prospectus should not be untrue. It should not be misleading. By chance or by intention, if promoter does any such things, अगर promoter ने कोई भी चीज समझ के, जानबूझ के या किसी के दबाव में आके गलत काम किया, यानी प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश की, तब जो ब्रीच है, जो उसने गलती की है, उस गलती करने के लिए हमारे जो इंडियन कंपनीज एक्ट है उसमें जो प्रमोटर है उसे मैक्सिमम 2 साल की सजा दी जाएगी या 50,000 रुपए फाइन भी भरवाया जा सकता है, या बोथ, यानी 2 साल की कैद उसके साथ 50,000 रुपए फाइन. ये सारी चीजें हो सकती है अगर प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर ने कुछ भी गलती या कुछ भी फ्रॉडुलेंट काम, फ्रॉडफुल काम करने की कोशिश की तो. तीसरा है लायबिलिटी टू थर्ड पर्सन. Promoter is always liable to the third person, to the general public, to the customers, to the shareholders and other people. So these are the three most important duties and the liabilities of a promoter. The promoter should always pay attention. Let's go further and focus on remuneration of a promoter. Now on your screen you can see the flow diagram that will give you information about the promoter's remuneration. चलिए देखते हैं पहला क्या है. पहला है he may sell his own property at a profit to the company provided he makes a disclosure to this effect. कंपनी ने जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी प्रमोटर को दे रखी है, उस प्रॉपर्टी को बेच के प्रमोटर पैसे ले सकता है, लेकिन ये साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसकी जानकारी, उसका इंफॉर्मेशन आपको कंपनी को देना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट प्रमोटर हैव टू डू. सेकेंड वन इज he may be given commission on sale of shares. अगर प्रमोटर किसी भी तरह का कमीशन से लेना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसे सेल को प्रॉपर सेल करना पड़ेगा. सो अगर हमारा जो प्रमोटर है उसने अच्छे शेयर सेल किए हैं तो उसमें से भी कुछ हिस्सा यानी कुछ कमीशन हमारे कंपनी हमारे प्रमोटर को दे सकती है. Let's go further and see the third one. Third one basically talks about that the promoter is getting shares by the company on par.
as students you know that there are concept of share. Under that जब हम शेयर्स की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 3 लेयर प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे. पार, प्रीमियम, डिस्काउंट्स. जब पार पे बात करते हैं दैट मीन्स कि जो बेस अमाउंट है उतना पे ही शेयर बिकेंगे. प्रीमियम पे बेस अमाउंट से ज्यादा यानी 100 के शेयर है तो 150, 200 पे शेयर्स बिकेंगे. अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो 100 के शेयर 50, 40, 30 या 20 पे बिकेंगे. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनको प्रीमियम यानी ज्यादा पैसे पे शेयर नहीं देंगे, उनको पार पे यानी मिनिमम नॉमिनल अमाउंट पे उनको शेयर बेचा जाएगा. ये भी बात यहाँ पे कही गई है. आगे देखते हैं. लास्ट वन इज ही मे बी पेड अ लमसम by the company. Sometimes what happens when promoter don't have to sell the shares, when promoter don't have property to sell, and even the company don't want to give shares to the promoter on par. In such a situation company will pay a lump sum यानी थोड़ा बहुत पैसा कंपनी अपने promoter को देगी. So these are the 4 ways a promoter can get a remuneration. Promoters are not paid specific salary, so that's why the promoter have different ways to get money. Let's go further and thank you. So thank you student for attending today's lecture. I see you in next lecture. Till then, study.